It is said to move in a plane. Ashmita, it is said to move in a circular path. Did you get the 11th one, Ashmita? A coin placed on a rough table just slips if it is placed at a distance 4r from the center. On doubling the angular velocity of the table, the coin will just slip when at a distance from center equal to. Yes, Ashmita, did you get the 11th one? I'm not able to hear you, Ashmita. Hope your mic is on, but I'm not able to hear you. Fine. Yes, anybody can tell me for the 11th one, students? A coin placed on a table just slips if it is placed at a distance of 4r from the center. On doubling the angular velocity, अगर मैंने angular velocity को increase कर दिया, doubled कर दिया, okay, the coin will just slip when a distance from the center equal to. So, Yes. so can you hear me? Yeah, now I can hear you. Yes, sir. So I was asking about 12th question. 11th question I finished. So can you tell me the answer for the 11th one? Yes, sir. Option C, R. Okay, how do you get it? Sorry, sir. Huh. How do you get that? So, distance is 4r and angular velocity is omega in case 1. So then Hmm. central acceleration is r omega square, which is 4r omega square. Okay, you mean to say that is in the first case, what is the formula for center? Are you using acceleration formula or the force centripetal? Acceleration formula, sir. It's actually, see one thing, a coin placed on a rotating table, what causes a coin to rest onto the rotating table? It's because of the force of friction, students. And students, the force of friction is provided by force centripetal, students. This is very important. Yani you can use acceleration. क्योंकि mass तो same है दोनों केस में. So now if I happen to go for force centripetal, just give me what formula? It's mr omega square, students. In the first case, omega is omega 1. Radius they've given to is what? 4r. Yes. Second case, what they're trying to go for? Omega is what? 2 omega. Okay, it's doubled. So now they're asking you what exactly R2 is. Agreed? So what did you do? Did you equate the accelerations? Yes, What's sir. it? Why did you equate the acceleration, Ashwita? So because it is centripetal force. So, Okay, that is for the coin. Yeah, bolo. so since the centripetal acceleration will be same for the table, right? Hmm. So that's why But- I did Okay, the now the answer सुनना. Students, read the question very carefully. अगर तुम देखोगे ना तो टेबल के लिए पहले केस में if you see over here they have written just slip. Please, this is what is important part which most of you all don't read it carefully. अगर तुम first line read करते तो वहां पे just slip आ रहा है. If you see the last line also, over there also just slip comes. What does that mean? That means the coin, if it has to slip, the force of friction should decrease. So the force of friction should be least at that particular distance. But still the body is said to revolve because of what? Because of the force of friction, and it performs circular motion. So if you read the first statement, a coin placed on a rotating table just slips.
Yani it's holding itself. Just slips, I can say, or it is just to made hold onto the table. किसकी वजह से? Force of friction. अगर force of friction उसके बाद में कम हो गया, then what happens? It will slip. Are you getting, students? Yani kya, what exactly you're trying to give for? You're trying to give in both the cases just slip. That means you need to equate what? Force centripetal in the first case, force centripetal in the second case. ये first case में 4 आ रहा है, second case में कितना होगा? क्योंकि दोनों केस में coin still holds itself onto the surface. It is not slipping, we consider. We say just slip, but it's still made to hold, and that is because of the force of friction we consider. So now when I speak about what exactly we're equating, your F1 will be equal to F2. So it's M R1 omega 1 square is equal to M R2 omega 2 square. Mass gets cancelled. What is the radius in the first case? 4r. What is omega 1 square? As it is, I'll consider. What is the radius in the second case? I need to find out. Omega 1 square is omega square. Omega 2 I'll consider will be equal to what? 2 omega the whole square, students. So can I say this is 4 omega square will cancel. What exactly radius in the second case will be simply r. Which option shows me r? Option is C. Students, the rest of the students, is it clear to all of you all? Yes, all. Yes, sir. Okay, fine. Now, 12th one, Ashwita, you were asking about a world in the sense that means you're making the body to revolve. Suppose if I give you a stone and a thread, Ashwita, and if I tell you to whirl it in the sense that means make it to move about a given axis so that the body performs circular motion. Okay. Have you heard about the name of a washing machine, Whirlpool? WHIRLPOOL. That's what it means, circular path. So what exactly I've said it for 12th? A mass 2 kilogram is whirled in a horizontal circle by means of a string. So you take a mass M, hold it with a string, and you make it to whirl it in a horizontal plane. Now, how do you make it to whirl in a horizontal plane? Either you can consider in a conical form or you can whirl it above your head. Either case, but the body should move in a horizontal plane. That's what they're saying it. Okay, by means of a string at an initial speed of 5 revolutions per minute. Now, you know what exactly the number of revolutions per minute are. Keeping the radius constant, keeping r constant. The tension in the string is doubled, T is doubled. The new speed is nearly. What exactly the new speed is? Smith has raised his hand. Anybody else other than Smith who can answer for this question? Page number 9494, students, question number 12. Yes, anybody else, students? Yes, Smith, can you answer? Yes, sir. So first we will take the r to be the radius of circle. Now applying the Newton's second law of mass along centripetal direction, considering direction towards center as positive. So T will be mrv square. Okay. From initial condition, FBW will be T equals to mrw square. So first equation, and for final condition, we will take 2T equals to mrw square the square 2. So 2T upon mr will be our second equation. Now substituting the value of T in equation. So 2 mrw square upon mr equals to W2 under root W. Now as a W we have given as 5 revolution per minute.
So substituting the value, we will get 7 RPM. Okay, that means are you taking the two equations as two separate conditions and taking the ratio? Yes, sir. Okay. See students, and what exactly according to you W stands for omega? Omega stands for angular frequency, angular velocity. Smith, omega को तुम क्या बोलते हो? Omega को I'm giving you two words. Omega, are you calling as angular velocity? And this is important. Of course, you're speaking W doesn't matter. Absolutely correct. लेकिन ये omega angular frequency है, angular velocity है. So velocity. Absolutely correct. ये students यही omega, ध्यान से सुना students everyone, यही omega when you actually go further ahead in mechanics, we are going to learn about simple harmonic motion. वहां पे it becomes angular frequency. Angular velocity, omega can be written as d theta by dt या theta by t. Theta by t यानी 2 pi by t for UCM we consider. Now, if in case if I write down 2 pi by t, if the body is performing UCM, then can I run 2 pi f? यानी ओमेगा स्टूडेंट्स ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन सेकेंड इनवर्स. ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. स्टूडेंट्स ये जो फ्रीक्वेंसी है वो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, और ये हमेशा हर्ट्ज में होता है या सेकेंड इनवर्स. यानी जो तुम्हें वैल्यू दी है ना स्टूडेंट्स, जिसकी वैल्यू दी है ना, वो एफ है ना कि ओमेगा है. लेकिन ये तुम्हारा एमसीक्यू सही क्यों जाता है? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ और 2 पाई कांस्टेंट है ना. तभी जाके तुम एफ को 5 लेते हो तो इनडायरेक्टली ओमेगा 5 बन गया. क्या ये क्लियर हुआ सबको? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट वेरी क्लियर व्हाट एक्चुअली ओमेगा इज कॉल्ड इन सर्कुलर रोटेशन मोशन. ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर velocity, and this is always measured in radian per second. It's always given by the formula 2 pi by t or 2 pi f for a body performing uniform circular motion we consider. F stands for frequency, that is number of revolutions per unit time when the body is whirled. Now read the question students. A mass of 2 kilogram, so mass of the body is given to us 2 kilograms, is whirled in a horizontal circle by means of a string. Suppose if I say it's made to whirl in a horizontal circle. Now when I say horizontal circle, ये है तुम्हारा center of the circular path we consider. अगर body यहाँ पे है and this is a string. Smith, can you tell me what are the forces acting onto the body? Horizontal plane. Centripetal. Centripetal force है, and who's providing that force centripetal? कौन provide कर रहा है force centripetal यहाँ पे? So Centripetal तो rotation. real, हाँ real force है ना, उसको कुछ original source होना चाहिए. कौन provide कर रहा है यहाँ पे? So the turning table. हाँ, टेबल कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे तो सिर्फ No, sir, हमें घुमा. that string, that string. Yes, यानी the tension in the string. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स सिंपल कंसेप्ट है. अगर मैंने स्टोन को वर्टिकल रखा, सोचो कि मैंने हाथ पे स्टोन रखा हुआ और स्ट्रिंग वर्टिकल है, अगर फिर तुम उसको लेके हुए ऐसे तुम उठाओगे और फिर उसको घुमाओगे ना ऐसे, आई गेट इट. तो जब भी स्टोन वर्टिकल ऐसा सीधा था तो उस टाइम पे उसका एमजी नीचे की तरफ था और टेंशन ऊपर की तरफ था, और ये तुम्हारा सेंटर था, है ना. ये दोनों बैलेंस है. लेकिन जब ये बॉडी एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, तो नाउ एमजी इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. Which force is directed towards the center? It's a tension. And that tension is actually the real force which provides the force centripetal. So now what exactly the formula for force centripetal, because we're speaking about omega. The formula for force centripetal is given by the formula m r omega square. Please students, centripetal force has three formulas: mv square by r, mr omega square, m into v into omega. Now read the question. A mass 2 kilograms is whirled in a horizontal circle by means of a string at an initial speed of 5 revolutions per minute. Any initial, if I happen to go for the first case, what is omega 1? 2 pi into 5, 2 pi f. और ये क्या है? 5 revolutions. 5 revolutions. ध्यान से सुनना, revolutions per minute. Per minute. Are you getting it? Per minute दिया है, यानी तुम्हें f दिया है स्टूडेंट्स, f दिया है.
And look at the options. Look at the options. सारे options में RPM लिखा है students. ये भी ध्यान में रखना. Everybody please hold yourself. Frequencies, number of revolutions per unit time. उसका unit मैंने क्या लिखा है? Hertz. Second inverse. इसके दूसरे यूनिट्स क्या हो सकते हैं मालूम है? It can be revolutions per second. It can be oscillations per second. It can be ripples per second. It can be cycles per second. ये सारे इसके यूनिट है, फ्रीक्वेंसी के यूनिट है स्टूडेंट्स. लेकिन यहाँ पे अभी सेकंड नहीं लिया, यहाँ पे पर मिनट लिया. डजंट मैटर. तो ओमेगा 1 कितना है? 2 पाई एफ. नाउ रीडिंग फर्दर. कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, यानी यहाँ पे सेकंड केस में और फर्स्ट केस में आर को कांस्टेंट रखा है. कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट स्टूडेंट्स, द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज डबल. यानी यहाँ पे पहले केस में टेंशन कितना था? पहले केस में टेंशन T था. T1 was equal to T. Now in the second case, what exactly the tension is? Doubled. I get it? The new speed is nearly. And look at the units. तो मैं F पूछा है. यानी अगर मैं ओमेगा 2 लिखूं तो कैसे ओमेगा 2 is 2 pi F2. तो भाई ये पूछा गया है. Are you getting it? Now when I'm doing it, students, see, I've done this completely. I've done entirely in this case. लेकिन जब भी तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हो तो यू हैव टू डू इट स्लाइटली ऑन अ फास्टर वे. एंड व्हाट एग्जैक्टली स्मिथ डिड इट एग्जैक्टली द सेम मैनर फास्ट वे. उसने डायरेक्टली क्या किया? उसने टेंशन एक दफे लिया, दूसरी दफे ले लिया, ओमेगा को ले लिया, आर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट. तो उसने क्या किया? सिर्फ ओमेगा के साथ में ही वर्कड आउट, दैट्स ऑल. लेकिन क्लियर कंसेप्ट इज दिस. समझ के करना है तो ये है. तुम कभी भी मल्टीपल चॉइस को अगर तुम अच्छी तरह से समझ जाते हो उसके बाद में तुम करो प्रॉब्लम्स. But first you need to understand what exactly you're trying to put forward. So now can I say force centripetal in the first case? Force centripetal in the first case is equal to the force centripetal in the second case. That means tension in the first case is equal to tension in the second case we consider. Are you getting it? So now if I say tension in the first case is equal to what? So T1 is T and that is equal to what? mr omega square. So can I say 2 pi 5 the whole square? Second case में tension कितना है? 2T. Take the ratio. What exactly it is? mr 2 pi f the whole square. Now see, t gets cancelled, m also will get cancelled. r, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो 4 pi square, 4 pi will also get cancelled. So what's my answer, students? Now can I solve this? What exactly I'm going to get it? So it's 1 by 2 is equal to 25 by f square. Are you getting it? What is f square? F square will be 50. Students, f square कितना होगा? 50. What is root of 50? Just more than 7. 7 square is 49. यानी स्टूडेंट्स तुम्हारा आंसर क्या होगा? सर फ्रीक्वेंसी is nearly equal to 7 rp. And what is the unit? Sir, it is in minutes because they have not given in seconds, they have given in minutes. So rpm. Students, is it clear, students? Yes, sir. Students, root of 50 आएगा, square root of 50. 49 square is 75. Sorry, 7 square is 49, and it's root of 50. So just greater than 7. और तुम read करोगे ना multiple choice question. Everybody read it. Last word क्या दिया है? Read the last word. Nearly, not exact. तो अगर word nearly लिखा है तो तुम्हारा answer should be near around the perfect root. And perfect root of 49 is 7. That's why the answer they've given us 7 rpm. So the option for 12th is D. Can I erase this now? Yes. Okay.
Okay, now can you give an answer for the 13th one? 13th one is easy. 13th, 14th, 15th. Can you answer for 13th, 14th, and 15th? Come on, the rest of the students, what are they doing? Bhumi, Alisha, Ashmita. Jeet, why you were absent in the last lecture? Jeet, from Borivali. हाँ सर. तुम absent क्यों थे yesterday? सर कल आपने ही निकाल दिया था. अरे लेकिन तेरा माइक वगैरह और कुछ नहीं ऑन था. मैंने कितनी दफे तेरे को मैसेज भी किया, अनम्यूट करने के लिए हाँ बोला, सर, लेकिन मैसेज मैंने देखा सर, मैं इस मैसेज मैंने देखा, इसलिए बाद में सर ये मैंने ये भी किया था, कनेक्ट भी किया था, अब तब जस्ट कनेक्ट किया मैं ना, आपने हमेशा निकाल लेता दिया. हूँ. जीत जीत मैं हमेशा स्टूडेंट्स को लेता हूँ. मैंने ब्लॉक नहीं किया है, किसी को ब्लॉक नहीं किया है. हाँ वो बात है कि मैं हाँ इतना पूछता हूँ, तुम लोग को रिप्लाई भी करा, मैं चैट में भी तुम्हें पर्सनल मैसेज में भी डाल देता हूँ करके, भाई कहाँ हो, कहाँ चले गए हो. और फिर जब मुझे नहीं आंसर मिलता है बहुत टाइम के बाद में, देन आई रिमूव यू. हाँ सर, पता है. मत किया करो यार, तुम्हारे स्टडीज मिस हो रही है. गेटिंग इट? हाँ सर. Vansh, why you were absent yesterday? Vansh from TP Bhatia. Vansh, are you there? Yes, sir. Why you were absent yesterday? Sir, I was not feeling well. Feeling well. What happened to you? Sir, I got fever. Okay, fine. Okay. Yes, anybody can give the answer. 13th one. A particle is acted upon by a force of a constant magnitude, which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a plane. Yes. Anyone? Smith, Nishant. 13th one. So it will be kinetic energy is constant. Okay. Acceleration क्यों नहीं, velocity क्यों नहीं? So in the question it's written that a force acting of a constant magnitude. So the acceleration cannot be a constant. Why acceleration cannot be a particle? Force is equal to mass into acceleration. Agreed. Yes, sir. So particle is acted upon by a force of constant magnitude. So what is see students, what exactly saying it? अगर मैं simple equation लो तो force is equal to mass into acceleration. Students, ध्यान से सुनना, physics का एक basic rule क्या होता है मालूम है? कभी भी कोई भी equation लेते हो, when you see three physical quantity students, are you getting it? और अगर उसमें से अगर suppose मैंने ये question दिया ही नहीं, students F is equal to m into a, मैंने एक simple equation दिया, तो तुम क्या बोलोगे? सर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ बॉडी फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट वेरिएशन. यानी हुआ क्या है, मास कांस्टेंट हुआ है, फोर्स और एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है. लेकिन अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देखोगे, जब गिवन अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी यहाँ पे तुम्हें फोर्स एक वेरिएबल है जिसको कांस्टेंट रखा है. दैट मींस कैन आई से चेंज इन मास विल एसोसिएट विद चेंज इन एक्सेलरेशन? हां या ना? अगर फोर्स कांस्टेंट रखा है तो मास और एक्सेलरेशन के बारे में तुम्हें देखना है.
प्लीज कभी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन तुम फिजिक्स में लिखते हो, अगर एक कांस्टेंट होता है तो बाकी जो है वेरिएबल्स यू हैव टू रिलेट देम. So now for this particular question, if I go on changing the mass, the acceleration of the body will go on changing accordingly. Now read further. A particle is acted upon by a force of constant magnitude, which is always perpendicular to the velocity of the particle. That means force is always perpendicular to the velocity of the particle. यानी कौन सा force होगा? Centripetal force. ये है velocity, ये है center. So what kind of motion the body is going to have? We'll say the body is going to have circular motion. The body is certainly going to have circular motion, we consider. Now, can it be its velocity constant, its acceleration constant, its kinetic energy is constant and moves in a straight line? अगर मैंने बोला, ध्यान से सुना, magnitude of force remains constant in this case. Mass into acceleration we consider. What about velocity? Is velocity a scalar or vector? Is acceleration a scalar or vector? Is kinetic energy a scalar or vector? So we'll say this is vector. Please everybody listen carefully. This is also vector. This is a scalar. Does velocity remains constant? No, sir. Velocity goes on changing. Velocity goes on changing. Why? Direction of motion goes on changing. Direction of motion goes on changing. Speed may or may not be constant. लेकिन direction तो change होगा. अगर direction of velocity changes, then acceleration also will changes, being a vector quantity. तभी जाके students ये दो constant नहीं होगा. What exactly remains constant? Kinetic energy, which is given by the formula half mv square. And what is this v? This is magnitude of velocity. That is speed. That is keeping speed constant. That is why when you see over here, students, I'll read the question once again. A particle is acted upon by a force of constant magnitude, which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in the plane. It follows that option A, its velocity is constant. No, its velocity cannot constant because direction of velocity goes on changing at each instant. So velocity cannot be constant. If direction of velocity changes, then the direction of acceleration also will change accordingly. And अगर तुम देखोगे ये tangential acceleration के हिसाब से देखो, centripetal के भी हिसाब से देखो ना तुम. अगर suppose body का ये है तुम्हारा velocity is in this direction. Can I say the corresponding acceleration centripetal का direction also? It is directed towards the center, but see the direction of acceleration centripetal goes on changing at each instant. So that's what we consider acceleration changes. What about kinetic energy? Kinetic energy remains constant. Why? Because the magnitude of velocity, that is speed, remains constant. And why does this remains constant, we consider? Because force remains constant. And force can be given by what formula? So the force can be given by the formula mv square by r. For a given body, at a certain radius, velocity all the time remains constant. That means speed remains constant. क्या ये clear हुआ, students, how to get the MCQ correct? Students, जब भी तुम solve करते हो ना तो तुम्हें शायद option A भी सही लगेगा, option B भी, लेकिन अगर तुम ध्यान से read करना जरूरी है. See, even this question also, some students are taking more time. Smith also took some more time to think. कि क्या velocity, क्योंकि more than one option भी हो सकता है, क्यों नहीं? तो यहाँ पे वो possibility है नहीं. और दूसरा, magnitude of force remains constant. If I say magnitude of force remains constant, in that case, then I'm speaking about magnitude of velocity. That is speed remains constant. समझ में आ रहा है? Magnitude of velocity, that is speed remains constant. और अगर speed को remain constant कर दिया, तो kinetic energy remains constant होगा. Path तो कभी straight line नहीं होगा, path तो circular होगा. Next one, 14th. Listeners, when you're solving multiple choice question, is not only trying to get the answer. ये ध्यान में रखना students. बाकी options क्यों नहीं है तुम्हारे answers में? यानी तुमने आंसर ए दिया है तो बी सी डी क्यों नहीं है? स्टूडेंट्स, उसके ऊपर भी सोचना जरूरी है. एंड व्हेनेवर यू आर इन द लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट्स, ये भी, या जब भी तुम प्रैक्टिस भी करते हो ना, यू हैव टू प्रैक्टिस इन द सेम मैनर. ऐसे नहीं कि तुम्हें आंसर ए मिल गया,
B क्यों नहीं है, C क्यों नहीं है, D क्यों नहीं, रीजन क्या है? Again, I've got 2 hands raised. Very good. Ashmita, answer for the next one. Yes, sir. So the car is moving on a circular level road, and curvature means the radius is 300 meter, and mu is 0.3, G is 10, and I have to Hmm. search V max of the car. So the Hmm. formula root mu RG And the meters. acceleration to gravity G is 10. Okay, so what exactly saying it? Formula? Formula is root mu RG. They're asking you maximum speed of the car. Is maximum speed mu or G? Yes. So because it is given that circular level road and considering friction because coefficient of friction is given. Okay, so that's maximum speed. And what's the formula you said it? Root mu RG. Yes, root under root mu RG. Absolutely correct, student shapes. ये है तुम्हारा maximum speed. But whenever you try to drive a vehicle, should you drive with maximum or what is the safe speed? What is the safe speed? Student, safe speed is always less than V max. समझ में आ रहा है? ये भी ध्यान में रखना, एमसीक्यूज में ये भी होता है. फाइंड द सेफ स्पीड, यानी तुम ये आंसर निकालोगे ना और जो ऑप्शन इससे कम दिखाएगा वो आंसर है फिर. ये हमेशा ध्यान में रखना. सेफ्टी के लिए क्या होता है, हमेशा तुम्हारा मैक्सिमम से कम चलना चाहिए. टॉपलिंग का क्या होगा? टॉपल के लिए तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन वी मैक्स होगा. तुम्हें अभी सिर्फ क्या करना है, वी मैक्स निकालना है, बस खत्म हो गया. इज म्यू गिवन टू यू? यस, दैट इज 0.3. हाउ मच इज द रेडियस? 300 इज गिवन टू यू. जी इज 10. व्हाट्स द आंसर? यू विल गेट इट. So we'll get 30 meter per second and then we'll convert it to Oh, kilometer per. so how do you multiply? What do you do to That's multiply? 18. 5 by 18 or 18 by 5? Sorry, sir. Kilometers per hour. Will you go for 5 by 18 or 18 by 5? 18 by 5. Okay, 18 by 5. So the answer will be 108 kilometer per absolutely. hour. Can I erase this, students? 15th one, anybody has got it? 15th? Yes, Ashmita, you want to answer for the 15th one again? Yes, Come on, sir. what about the rest of them? Now today Ashmita is also coming along with Smith. Come on, what about rest of them? Jeet, come on, answer there. Mayur, Mayank, Nishant, Purvi, Prajwal, Shubh. सोहम तू कहाँ है सोहम? सोहम, Yes, sir. तो आंसर क्यों नहीं दे रहा है? No, sir. I'm there. I was just seeing. सो रहा है, सच्ची बोल, सो रहा है ना तू? नहीं सर, नहीं सो रहा. हाँ, पता चला तू गधे के अंदर से ले रहा है, हाथ में सेलफोन है. Yes, Ashmita, answer. Yes, sir. So, here speed is constant, so it means velocity is also is constant and acceleration is 0. So first option is wrong since they are given that velocity changes and acceleration is v by r square, which is wrong. Does velocity changes? No, velocity is constant because speed is constant. Okay. It is given that speed is constant Hmm. and radius is r, and there is centripetal force towards the center, which is Okay. F by r. So option C is right. Okay. Nishant, sorry. Yeah, Nishant. 15th one only. What about option A? Is option A not the correct answer? Wait 1 minute. 15th one, option A is not the correct answer. It's only one option correct, or there are more than one option. If a car is moves around a circular road of radius r at a constant speed, No, only one option, I feel. which one? C part, what she said it? Yeah, see. Okay, then why not A? Why not A?
Okay, Nishant, can you answer? Sorry, Smith, can you answer? So in the question is written that the constant speed in the it shows the in the option A it's written that the velocity changes and the acceleration is VR square. Absolutely correct. स्टूडेंट देखो ध्यान से रीड करो. इसके पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ सर. नो माय डियर अश्मिता, वापस तुमने यानी मैंने इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया इसके पहले वाले एमसीक्यू में, कुछ पल्ले नहीं पड़ा है. आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली. स्मिथ, इसके पहले ही मैंने बहुत कुछ बोल दिया था ना. Yes sir. इसके अगले क्वेश्चन में मैंने बताया था स्पीड का मतलब क्या है, वेलोसिटी का मतलब क्या है. हमारा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों आ रहा था भाई पहले केस में? स्टूडेंट्स बोलो ना. काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी था. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर. तो अश्मिता, ओवर दैट वी स्टैंड्स फॉर स्पीड और वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी. हाँ, वी स्टैंड्स फॉर स्पीड, नॉट वेलोसिटी. And when I say about velocity, then the answer is now you'll have learned it from class 10 standard. Most of the students had circular motion in 4th chapter in 10th standard. ये क्लियरली एक क्वेश्चन दिया है तुम्हारी 10th की टेक्स्ट बुक में ही दिया है. अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाई द मोशन इज एक्सेलरेटेड. ये क्वेश्चन 10वीं में ही पूछा गया है. A body performing uniform circular motion, why the motion is accelerated? Reason क्या है? Of course, a uniform circular motion is accelerated. अभी तुम बोलोगे accelerated का मतलब क्या है? V greater than u या V less than u, लेकिन UCM बोला तो V तो constant है. यानी स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है. यानी क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना. स्टूडेंट सर्कुलर मोशन को सिखाने के टाइम पे मैंने क्लियरली बोल दिया था कि अगर तुम यूसीएम के बारे में बात करते हो या नॉन यूसीएम के बारे में बात करते हो, दोनों केस में तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग. सिंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग, ऑफ कोर्स द मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड. तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए देखो, इट्स वेलोसिटी चेंजेस. वो करेक्ट वर्ड है. क्या चेंज हो रहा है वेलोसिटी में? क्या चेंज हो रहा है वेलोसिटी में? क्या चेंज हो रहा है? क्या स्केलर पार्ट चेंज हो रहा है या वेक्टर पार्ट चेंज हो रहा है? तुम बोलोगे वेक्टर पार्ट चेंज हो रहा है, स्केलर पार्ट तो कांस्टेंट रहेगा. बिकॉज व्हाट इज द स्केलर पार्ट ऑफ वेलोसिटी? स्पीड. समझ में आ रहा है? वेक्टर पार्ट इज चेंजिंग, द डायरेक्शन इज चेंजिंग. तो वो वर्ड क्लियर है, लेकिन उसके पीछे वाला देखो. एंड द एक्सेलरेशन इज, स्टूडेंट्स व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल इज v square by r and not v by r square. इसलिए वो गलत है. एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या है? v square by, and they have given v by r square. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Nishant, is it clear now? Clear. Okay, can you give me the answer now for 16? Please, students, 16 to 20. 16th one, T is equal to mr omega squared. So answer will be 1.6 Newton. Okay, tension is equal to mr omega square now. Of course, it's in a horizontal. See, now he did the question so easily. क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में बोला स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिया है. तो यहाँ पे जब सेंटर है और स्टोन यहाँ पे स्टूडेंट्स, दिस इज सेंटर, तो mg is acting downward. Which force is required? Force centripetal, and that is provided by the tension. है ना? तो क्या पूछा उन्होंने? A small of mass is whirled in a horizontal circle at the earth's string of 0.5 and constant angular speed. यानी formula what is that? It's mr omega square. So is the mass of the particle given to you? Yes, 0.2. Is the radius given to you? Yes, sir, 0.5. Is omega given to you? 4 radians per second. Multiplying it, you will get the option as B. So the answer for 16th is B. Seventeenth, 18th, 19th, 20th.
Smith, you have done all the questions? 17, 18, 19, 20 सारे किए? No, sir. Okay, सारे complete कर 17, 18, 19, 20 तक. Earth, Earth, are you there? Yes, sir. तो बार बार जा रहा, बार बार आ रहा, कितने दफे तेरे को अंदर लूं मैं, तो जा रहा है अंदर आ रहा, जा रहा है, सर मैं तो कुछ इशू आ रहा है। म्यूजिकल चेयर के हिसाब से खेल रहा है. तो वेयर डू स्टे? अंधेरी। अंधेरी. ओके, ये तो म्यूजिकल चेयर की तरह खेल रहा है, बार बार तो बाहर जा रहा है, बार बार अंदर आ रहा सर वो पता नहीं क्या हो रहा है जूम को। है. Okay. And students, now the cases have increased about 20,000. Huh? Now government is saying it, अगर suppose daily cases 20,000 से ऊपर जाते हैं, then certainly they are going to think. And Yes. students, when you are getting time, students, please get vaccinated. Right? Yes, sir. Please I just get registered. and when you're getting vaccinated, to vaccination के बाद में भी please for first 15 days be careful. Don't unnecessarily move out of your house, and when if you're moving out, do double masking. But sir, you heard the news? It's already the cases have exceeded about 20,000 yesterday. नहीं सर, यूएसए में 1 million cases of Omicron per day. यूएसए में 1 million cases of Omicron per day. क्या बात है, देखा. They broke all records. एंड स्टूडेंट्स ये भी ध्यान में रखना, हमेशा ये जो केसेस आ रहे थे ना, पहले यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज में आता है, और वहां पे आता है उनका नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाता है. हमारे यहाँ पे पीक पकड़ता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च. हमारे यहाँ पे Yeah, फेब्रुवरी. usually. लास्ट ईयर भी स्टूडेंट सबसाइड हुआ था, लेकिन उसके बाद में वापस पीक आ गया था बीच में. डेट्स आ गई थी, 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड्स की डेट्स आ गई थी स्टूडेंट्स, एवरीथिंग वाज देयर, लेकिन वो फिर ग्रोथ होते रहा एंड एंड मोमेंट पे उनको कैंसिल करना पड़ा एग्जाम्स. हाँ सर, 10th और 12th के एग्जाम डेट आए थे, सब तैयारी भी हो रही थी सबकी, और तभी आता है कोविड 19 फिर से. हाँ देखा, सोम कितना स्मार्ट है, सारे न्यूज है. अभी तक सोम कैसा ऐसा जाग गया है ना. एमसीक्यूज के लिए एक आंसर नहीं दे रहा, तो एक आंसर नहीं दे रहा मुझे. तेरे पापा से मिलना पड़ेगा मुझे. यस. मिलो उनको एक दफे. क्या सर? पापा को मिलो एक दफे सोम. हाँ सर, मिल सकते हो आप. अच्छा, कि मैं बोलूं उनको कि आंसर नहीं देता लेक्चर्स में. Okay, anyone has done up till 20th? Yes, anybody who has done 17th, 18th, 19th, 20th, all of them. Raise your hand.
think on to the 19th one properly, students. ये object यहाँ पे है A, B, C. B is the greatest. B is maximum. Yeah. So A is maximum. Which one? Sir, A is maximum. A is maximum. Yes. Ishan, what makes you say B is greatest? B is going downwards, right? Ishan, think in this. Okay, fine. I read the question properly. Object is over here. Normal Object is on the first. inner side. Object is over here. And object is over here. चलो अभी तीनों का radius देखो. चलो let us go for 19th question only, students, everyone. No. 19th. I understood the question. I didn't read the normal reaction force. Yes. So I thought maximum velocity. So I took B. Okay. So maximum is where exactly it's maximum at A, B, or C? Students, what's the answer for 19th one? Maximum at A. Maximum is at A. Now see, how do you get it maximum at A? Mayank, can you tell me, Mayank? So in that formula, N is equal to mg plus mv square by r. mv square by r. Yeah. Since the radius is small, the maximum of nv square by r will be maximum, and you add both of them, so it will have the maximum normal reaction. Absolutely correct. Students, अभी देखो ध्यान से सुना. What is the radius? अगर तुम्हें ये ध्यान से वापस समझना, students, this is for the last time coming in front of you. अगर तुम पहले सबसे पहले ऑब्जर्व करो, ये रेडियस देखो, ये रेडियस देखो, ये रेडियस देखो. If you try to judge it, you'll say, sir, RA is the least, RB is still greater, and RC is the maximum radius. Now let us go for the free body diagrams in each case. अगर A को देखता हूँ तो students, mass mg is moving in the downward direction. This is the normal reaction force at point A. Body is of same mass. यही body यहाँ पे आ रहा है, यही body यहाँ पे जा रहा है, यही body यहाँ पे है, तो mass is same. यानी सारी जगह पे mg से. Okay, और दूसरी बात उन्होंने, the body is moving with constant speed. Students, they have made it clear. The body is moving with constant speed. यानी v भी constant है, students. यानी सब जगह पे v भी constant है. इसका v constant है. यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी तुम्हारा mg नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर जाएगा, normal reaction of b. यहाँ पे mg नीचे की तरफ जाएगा, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट सी. लेकिन तीनों का इक्वेशन अभी देखो सेपरेट होगा. अगर मैं पहले वाले का इक्वेशन लूंगा स्टूडेंट्स, कैन आई से फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द बॉडी इज गोइंग टू गो अप. अगर बॉडी इज गोइंग टू गो अप, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है सर, Na इज ग्रेटर देन mg. यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी इज कमिंग डाउन, तो कैन आई से mg इज ग्रेटर देन nb. और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी इज गोइंग अप, द मोशन इज इन दिस डायरेक्शन. एग्रीड. तो यहाँ पे क्या होगा, nc is greater than mg. Now, if I want to write down the mathematical equations for all of them, so let us put forward the equations. तो यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो na, so can I say my first equation is na minus mg is equal to mv square by r, and that is r is radius of a. So can I say normal reaction force at point A का formula क्या होगा, mv square by ra plus mg. ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 होगा for first position. This is for second position and this is for third position. Second के लिए क्या होगा sir, now mg is greater, so can I say it's mg minus normal reaction at point B is equal to mv square upon r of b. Therefore, what exactly normal reaction at point B will be equal to what? It is mg minus mv square upon r of b. That's my equation number 2. Third केस के लिए क्या होगा, na is greater than, तो यहाँ पे मैं फाइनल डायरेक्टली लिखना स्टूडेंट्स. Therefore, what exactly normal reaction point at point C? So it will be mv square upon radius of C plus mg. That's my equation number 3. Agreed students? तीनों equation आ गया मेरे. अभी तीनों equation में students ध्यान से देखना. Weight mg. Agreed? Weight mg and weight mg is constant. Is constant. Agreed? Can I say mv square is also constant in the numerator? mv square is also constant in the numerator.
mv square is also constant in the numerator. यानी स्टूडेंट्स अभी ध्यान से सुना, अगर मैं इसको मैं इक्वेशन में फॉर्म में लिखता हूँ, those students who are still not able to get such kind of questions, एक सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली मिल सकता है ये क्वेश्चन. जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा भी वाइज और स्मार्ट है, इक्वेशन देख के डायरेक्ट आंसर, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसको समझ के करने के लिए ट्राई टू थिंक एज इफ मैंने सब में वेट को मैंने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, लेट मी टेक दिस एज वेट एज इक्वल टू 10, और ये यानी मैं mg को ले रहा हूँ 10 स्टूडेंट्स एंड mv स्क्वायर को मैं ले रहा हूँ 1. लेट मी टेक इट इन दिस केस, मास इज 1 किलोग्राम, g is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, mv स्क्वायर इज 1. लेट मी टेक इट इन दिस मैनर. तो कहने से पहला इक्वेशन होगा मेरा 1 अपॉन ra प्लस 10, आई गेट, ये na का हो गया. nb का क्या होगा, व्हाट इज nb के लिए, so it will be 10 minus 1 upon rb, और ये nc के लिए क्या होगा 1 upon rc plus 10. Now can you tell me which radius is minimum? सर ये सबसे स्मॉलेस्ट है, अगर ये स्मॉलेस्ट है तो कहने से ये फ्रैक्शन सबसे मैक्सिमम होगा, फ्रैक्शन सबसे मैक्सिमम होगा. आया ना, ये rb की वैल्यू इज ग्रेटर देन ra, तो इफ इट इज स्लाइटली ग्रेटर तो कहने से ये फ्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा, 10 माइनस समथिंग, फ्रेंड्स ये 10 प्लस समथिंग, you are adding something so the value will increase. ये 10 में से सेपरेट करो तो value will decrease. यहाँ पे भी प्लस है, RC is greater, लेकिन you can't judge between these two. ये 10 plus something, ये 10 यानी ये always minimum ये होगा, ये still more and this is maximum. देखो स्टूडेंट्स ये 10 में से सेपरेट कर रहे हो ना तुम, तो इसकी वैल्यू 10 से कम ही होगी, irrespective of RC. Whether RC is increasing or RC is decreasing, your value will be greater than 10. Yes. प्लस आ रहा है, यानी ये क्या होगा, ये मिनिमम हो जाएगा, ये मोर हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि आर सबसे कम है. यानी स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन में चेंज करके मिनिमम भी पूछ सकता हूँ, या मैंने दो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, फाइंड आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम नॉर्मल एक्टिव फोर्स. सो मिनिमम इज एट पॉइंट बी, मैक्सिमम इज एट पॉइंट ए. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? निशान क्लियर? Clear. ओके, मयंक, मयूर, Mayur, are you all there? Ashmita? Yes, sir. Yes, sir, clear. Okay. And I'm not asking Smith. Smith, you knew this? तुम्हें आंसर मिल गया था? Yes, sir. Okay, fine. Can I erase this, students? इसको पूरा erase कर दो. And students, ये जो circular motion है ना, तुम्हें लगता होगा कि circular motion इसको time क्यों लग रहा है? Students, circular motion is a two-dimensional motion, और circular motion ध्यान से सुनना, ये आगे जाके तुम्हारे वेव मोशन में बहुत यूज होगा, आगे जाके तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज होगा, आगे जाके तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स को भी घुमाते हैं हम, कंसेप्ट ऑफ साइक्लोट्रॉन आएगा, गेटिंग इट? वहां पे भी तुम्हारा गैल्वेनोमीटर कैसे मूव होता है, एमीटर का वर्किंग, वोल्ट मीटर का वर्किंग, वहां पे सारों में सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट यूज होगा. डुअल नेचर ऑफ लाइट के अंदर भी तुम्हारा चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराना, साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट आता है, तो वहां पे सारे सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट आते हैं. इसलिए ये चैप्टर इज टू बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि इसके अभी जो कंसेप्ट होंगे वो आगे जाके दूसरे चैप्टर्स में यूज होगा. एक सिंपल आई मस्ट हैव टोल्ड यू दिस, अगर सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया, समझ में आ रहा है क्या व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? इफ आई एम मेकिंग अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, और उसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट कर दिया, तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा स्टूडेंट्स. उसका पाथ तुम्हें सर्कुलर मिलेगा, और पाथ सर्कुलर मिलने से वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तीनों आएंगे, तो वहां पे भी तुम्हें ये तीनों फॉर्मूला ध्यान में रखना है.
Okay, can you give me an answer for the 17th one? Anyone? When a girl rides around the corner of a bicycle at a steady speed, when a girl rides around the corner on her bicycle at a steady speed, yes, friends, can you tell me what's the answer for this? Which force is required for the body to the cyclist to turn? Students, what's the answer for the 17th one? Students, when she's taking a turn, she will slightly tilt from the vertical. What's the formula? V is equal to under root RG tan theta. Are you getting it, students? आया ना, तो वहां पर भी हम लोग ने पकड़ा था ना, force of friction we consider in this case. यानी तुम्हारे component of the horizontal component, the centripetal force is due to the friction between the tires and the ground that will hold it. लेकिन वहां पे हम लोग ने eliminate कर दिया था friction को, लेकिन one can consider what was the reason for the tire to be hold. अगर tire hold नहीं होगा, then the body is going to skid. So simple है, अगर तुम्हारा tires deviate होता है from vertical, it can have a skidding effect. It will slide. So now the answer for this will be what? At a steady speed, remaining V constant. Students, the centripetal force is due to the friction between the tires and the ground. So who provides the necessary centripetal force? It's the friction between the tires and the ground. 17, the answer is C. 18th one, can you give me an answer for the 18th one? A car is moving on a circular track of radius 300. Oh, this is exactly identical to what was done yesterday. Anybody can tell me the answer for 18th one? Yes, Mayank, what's the formula you use? Mayank is correct. Sir, you do the vector addition of the Acceleration net. tangential and acceleration centripetal. Absolutely correct. Plus acceleration center. ये formula होगा students. What he said is absolutely correct. यहाँ पे तो tangential दिया हुआ students. A car is going on a circular track of radius The 1 answer is 5 meter per second square. Yeah, answer is yes, absolutely correct. 5 meter per second square. Next one, so tangential कितना दिया मालूम है? The tangential acceleration 80 is given to us 4 meter per second square. अभी देखो यहाँ पे word tangential दिया है. अगर तुम ध्यान से पहला वाला क्वेश्चन को लास्ट हम लोग ने yesterday जो हम लोग ने क्वेश्चन दिया था ना, जो स्मिथ ने सॉल्व किया था, तो देखो वहां पे tangential ने दिया था. Read the statement. Its speed is increasing at the rate of 2 meter per second square. And देखो ये see the wordings. Students, ये हमेशा ध्यान में रखना MCQs करने के टाइम पे, और जब भी तुम मेरे साथ भी MCQ तो highlight those words. Students, जब भी students multiple choice questions करते हैं ना examinations में, when you are giving a major test, they read the question once, but while reading it out, they highlight important words. तो उनको जब भी वापस दूसरी दफे उस प्रॉब्लम को रीड करना है तो पूरा प्रॉब्लम रीड नहीं करते, सिर्फ वो वर्ड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं एंड साइमल्टेनियसली लुक एट ऑल द 4 ऑप्शंस. कभी कभार तो ऑप्शंस के यूनिट्स को देखते हुए तुम अपना फॉर्मूला मेंटेन कर सकते हो. स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स who don't remember the formula, but they look at the unit of the options. The answer is, they look at the unit of the options and they look at the units of the given information and they start playing around with that. और उसे उनका आंसर मिलता है. इसलिए स्टूडेंट्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर था उसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. So students, a person who wants to get MCQs correct should be really good in conversions, to convert units, and secondly should be very very strong in formulas along with units. अगर तुम strong हो formulas, units, and तुम्हारा JEE Mains students is more precisely on with. तो ये तुम्हारा tangential मिल गया. Acceleration centripetal कैसे मिलोगे? Simple sir, acceleration is v square by r दिया है. V कितना दिया है? V given to is 30, so this becomes 30 square. And what is the radius? 300. Solution will be equal to how much? 5. 19 we have done. Can you even answer the 20th one, students?
A particle of mass m is tied to a light string and rotated with a speed v along a circular path of radius r. The tension in the string and mg gravitational force on the particle, then actual force acting on the particle r. Question number 20th. What is the actual force acting on the particle? Sir, option A is the answer. Option A, are you sure? Yes, sir. Anybody else who wants to contradict Smith? And students, not necessary है कि Smith हमेशा सही होगा, ऐसा नहीं है. You can simply go for free body diagram. What Smith said is absolutely correct. ये center है, ये तुम्हारा stone आ गया, horizontal plane में है. Horizontal plane में यानी mg तो constant होगा. ये कौन सा force है? Tension, and tension itself provides what? बस ये भी तो force है. T is equal to FCP. या तो तुम FCP और mg बोलो, है ना? या तो force centripetal और mg बोलो, या T और mg बोलो. You can't have an additional force. Am I adding them? No. Your T is equal to FCP. It's not T plus FCP. ये clear हुआ? Please अभी ध्यान से सुनना. अगर हम banking of road ले रहे थे, ध्यान से सुनना students, banking of road ले रहे थे, वहां पे normal reaction force ये था, तो उसका horizontal component हमें n cos theta मिलता था, sorry n sin theta इस तरफ मिलता था, ये n sin theta था students, है ना? कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर ये थीटा है, ये तुम्हारा mg जा रहा है, तो देखो ये 90 हुआ, तो ये तुम्हारा थीटा मिल रहा था स्टूडेंट्स. एग्री? तो ये होगा n cos थीटा n sin थीटा. अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर मैं फ्रिक्शन लेता हूं तो फ्रिक्शन इस तरफ जा रहा था स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन वाज दिस. एग्रीड? ये एंगल थीटा था स्टूडेंट्स. अभी मैं फ्रिक्शन को अगर मैं रिजॉल्व करता हूं टू कंपोनेंट्स, तो ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है वो हमने ऐड किया था. ट्राई टू अंडरस्टैंड, एडिशन कभी होता है और इक्वालिटी कभी आता है. तो ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अलोंग विद cos थीटा, ये दो फोर्स मिला के तुम्हारा mv²/r बनता था. तो समझ में आ रहा है? ये दोनों फोर्स मिला के तुम्हारा क्या बनता था? फोर्स सेंट्रीपिटल, दैट इज mv²/r. लेकिन यहाँ पे the necessary tension itself is your force of centripetal. That's why Smith said is what? That is mg and t are the only two forces acting on the stone. When the stone is said to move, the particle is said to move in a horizontal plane. Option B में क्या है? mg and additional force? No. mt and additional force? No. There is no additional force. It's an equality force. Equal. या तो t लो या तो fcp लो. Addition ऐसा होता है. ये दोनों मिला के यहाँ पे addition नहीं आएगा. So C is also not. D only 4 centimeter. No. So option is A. क्या ये clear हुआ students? 20th one, is it clear? Students, is the 20th question clear to all of you all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Now students solve 21st and 22nd, the good ones. Let's see who can get these two questions. These are the good ones. Anybody who completes 21 and 22, please do raise your hand. Fast. Vansh Mehta, are you there, Vansh? Okay. समझ में आ रहा है वंश? Yes, sir. Okay. Purvi, what about you, Purvi? Are you there, Purvi? Pratham? Purvi, are you getting it? Oh, Smith has solved both the questions.
Sir, only 21st. Okay, 21st. Okay. 22nd भी कर. Is anybody else who wants to answer for 21st other than Smith? A long horizontal road has a bead which can slide along its length and initially placed at a distance L from the end A of rod. एक bead है जो एक distance L पे पड़ा हुआ है and the rod is placed horizontal. The rod is set in an angular motion about A with constant angular acceleration alpha. Yani motion is accelerated, alpha is constant. If the coefficient of friction between the rod and the bead is mu and the gravity is neglected, okay, then the time after which the bead starts slipping, that means the time at which, the answer is the time at which the force centripetal, which is provided by the force of friction, becomes almost decreasing or almost a point where it can hold. उसके beyond अगर मैंने speed बढ़ा दिया तो शायद वो centrifugal होगा. Students, पहले मैं question बता देता हूँ. Smith, I'm not solving this question, Smith, and the rest of them. मैं सिर्फ तुम्हें explain कर देता हूँ ये problem. फिर let me see how many of you all can get the answer. Smith, you will be the last person to answer to this particular 21. तो 22 solve कर. Okay, और 22 भी अच्छा question है. Let me make you understand the question, students. Okay, उन्होंने क्या दिया? A long horizontal rod has a bead which can slide. Students, इसको ऐसे समझो कि ये rod है. Please pay attention. This is a horizontal rod. I'm giving it to you. Okay. Bead का मतलब कि यहाँ पे एक object रखा हुआ है, students. Okay, there is an object placed over here. This is your bead. ये है तुम्हारा rod and the bead is placed at a distance L. अभी मैं capital N नहीं ले रहा हूँ. Oh, Nishant has got the answer. Very good. 22nd, even he also got it. Nishant, you'll be answering for 21st, huh? Let me just explain the question. Okay. So ये जो bead is है, students, bead is rested at distance L. अभी students मैं जानबूझ के मैं small l लिख रहा हूँ. मैं capital L लिखूंगा तो वो angular momentum जैसा दिखेगा. Students, इसलिए मैंने small l दिया है जो you can consider radius. ये जो बीड है इसको हम एक एंड के तरफ से रखते हैं. द रॉड इज प्लेस्ड एट एंड इट्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल. तो ये क्या हो जाएगा सर? ये मेरा हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, एंड द रॉड आई कैन से इज मेड टू रोटेट इन दिस वे. यानी इसका जो रॉड का है, रॉड इज लाइक टू परफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी. मींस कैन आई से द बीड इज गोइंग टू परफॉर्म व्हाट काइंड ऑफ मोशन? सर्कुलर मोशन. हाय एंड स्टूडेंट्स, agreed? So is the only thing that the bead is going to perform circular motion? Yes, it's going to perform. और ये bead hold करके रखेगा. Who's holding it? The friction. अगर तुम देखोगे तो bead के ऊपर क्या है? Students, अभी ध्यान से देखना. ये तुम्हारा rod था. यहाँ पे तुम्हारा bead है. यानी यहाँ पे weight mg की तरफ act हो रहा है. Agree, students? Weight is going to act in this direction, students. mg is acting vertical downwards. और ये तुम्हारा center है, point A है. यहाँ पे कौन सा force act हो रहा है? Sir, force of centripetal होगा. यहाँ पे कौन सा force हो रहा है? Normal reaction force. Agreed? Force of centripetal is provided by the force of static friction, and that is also equal to what? Force of centrifugal equal in magnitude opposite in direction. Yani, can I say your force of static friction is nothing but your force of centrifugal? Yes. Students, क्या ये समझ में आ रहा है? ये वो वाला हुआ concept. Students, ये वो वाला concept हुआ. A car is moving on a circular track. अगर तुम्हारा speed बढ़ता है तो car is thrown outwards.
अगर तुमने ये रॉड को एक एंगुलर स्पीड से ज्यादा मूव किया तो क्या होगा? बीट चला जाएगा, उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या बोला, अल्फा कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसका मतलब इफ आई वांट टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ अल्फा वर्सेस टाइम देन अल्फा इज कांस्टेंट। तो उसका मतलब व्हाट इज द ग्राफ ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस टाइम? सर मोशन इज एक्सेलरेटेड, मोशन इज एक्सेलरेटेड, ये ओमेगा वर्सेस टाइम है, यानी योर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल। यानी तुम क्या करो, स्पीड बढ़ा रहे हो, 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 लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही बढ़ाया तुमने। अगर बाई चांस तुम्हारा स्पीड इससे और ज्यादा बढ़ता है तो शायद ये बीड को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो जाए, यानी कोई फोर्स है जिसको होल्ड करके रख रहा है। कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन होगा। उस टाइम पे तुम्हें ये जो mg है वो हमेशा n के साथ में बैलेंस हो रहा है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को निग्लेक्ट करना। इसको क्या करना है, यानी कहां पे भी तुम्हारा mg का रोल प्ले नहीं करेगा। होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So once again I read the question, student. A long horizontal rod has a bead which can slide along its length. Okay, the entire length we consider. Initially placed at a distance capital L, मैंने small l लिया है. Initially placed at a distance capital L from one end of the rod. The rod is sent in angular motion about A, is said to rotate about an angular motion with constant angular acceleration. Alpha is constant, so omega is increasing, students. If the coefficient of friction between the rod and the bead is mu, mu is the coefficient of friction which is holding it. Okay. And gravity is neglected. The time after which the bead starts slipping. Means if my speed increase certainly, अगर मैंने speed थोड़ा सा और बढ़ा दिया, then I'm going to get a centrifugal force. So at what instant it can hold? Yes, Nishant, carry on now. So what I did was I took m omega square L is equal to F mass. Okay, so you mean to say that is your force centripetal. Yeah. Also, and that is equal to force of static friction, and that is equal to ml omega square. That's what you mean to say. Yeah. Absolutely correct. देखो ना, ये तो बैलेंस हो रहा है. फिर The force tangential is equal to ml alpha. That's the second equation. force tangential is equal to what? ml alpha. Okay, mass into acceleration tangential. Let us go in this Yeah. manner. And what you are saying is acceleration tangential, students, what is the formula for acceleration tangential? R alpha. R alpha. Yeah. क्योंकि यहाँ पे tangential acceleration जा रहा है, तो वो tangential acceleration को R alpha की जगह पे what is Nishant is saying? L into alpha. Agreed? Then Now you have to just substitute the equations, and you get W is equal to alpha times. That's the final equation you get. okay. That means in the first case you are trying to go for force of static friction. That means if I go for this equation, students, it's mu s into n. Mu s into n is equal to ml omega square. That's what you mean to say? Oh, correct. Wait 1 minute. Yeah, okay. Yes. Okay. So now what we can do is Just hold. okay. Think as if I'm showing you a 3D diagram. हाँ? ये रॉड का ऊपर का सरफेस है निशांत. Yeah. ये ऑब्जेक्ट है. This is what the object is. Okay. Now I'll show you the forces. mg नीचे की तरफ जा रहा था. Normal reaction force ऊपर की तरफ जा रहा था.
ये तुम्हारा पॉइंट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये तुम्हारा फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल होगा, दैट इज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which is also balanced by force of centrifugal. तो centrifugal is equal to Fs. और एक फोर्स है जो बॉडी को tangentially भेजेगा, आया ना? क्योंकि अगर बाय चांस ये फोर्स कम हो जाता है तो सी वी हैव गॉट tangential force also. This is what the force which is going to go tangentially. यानी कह रहे these are the forces acting on the bead. आया ना? Yes, correct, sir. या अभी देखो ये तो फोर्स बैलेंस हो रहा है, तो इन दोनों की वजह से यू हैव गॉट दिस इक्वेशन. एग्रीड? Agreed. Does normal reaction force balances mg? आया ना? Yeah. Throughout the motion, the bead is on top of it. When the entire system is going to rotate, n and mg will be in the opposite direction. हमेशा throughout the motion. Are you getting it? Normal reaction force ऊपर होगा, mg नीचे की तरफ होगा, Yes, और sir. ये हमेशा बैलेंस होगा. लेकिन did they tell you to take gravity? Neglecting gravity. Neglecting. Gravity. So now can I say which is the only force which is trying to balance the normal reaction force? Okay, and yeah. So it's Tangential. mw square L is equal to That u ml your force tangential is equal to normal reaction force. ये सबसे बड़ा हिंट है यहाँ. Students, ये पता चला तुम लोगों को? Now you'll get your answer. Students, your force tangential is equal to your normal reaction force. ये देखो, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने वेट को mg को निगलेक्ट करना है, तो हमें ये दो फोर्स को इक्वेट करना पड़ेगा. नाउ सी ओवर हियर, म्यू s force tangential is equal to normal reaction force. Normal reaction force की जगह मैं क्या लगूंगा? ml will get cancelled. Agreed. What is omega square? Mu s into alpha. What I need? Time. What I need? At what time it just slips. So now can I use my kinematics? Which is the formula I'm going to use? V square U square 2 into A into S. Rather than going for this, can I say V is equal to U plus 80 लूंगा students, मुझे time चाहिए तो alpha t आएगा rather than A into theta. Students ये formula use होगा. Final velocity is equal to initial velocity plus alpha. मुझे time चाहिए students, time चाहिए. क्या ये clear हुआ? Agreed? Let us say that the initial angular velocity is 0. So omega is equal to alpha into t. Are you getting it? What is omega square? Alpha square t square. Can I substitute this back? Mu s into alpha is equal to alpha square t square. One of the alpha will get cancelled. What's the answer for t? Which option shows me that? क्या ये clear हुआ students? Students, जब भी मैंने forces दिया है तो forces के टाइम पे मैंने जानबूझ के ये दो force और एनर्जी दिया है. एक सिंपल एग्जांपल है ना, रॉड की जगह पे स्टूडेंट्स तुम स्ट्रिंग लो ना, हॉरिजॉन्टली मूव करो. अगर बाय चांस तुम्हारा स्ट्रिंग कट होता है, अगर बाय चांस मेरा स्ट्रिंग कट हो जाता है, तो हाउ डज अ बीट गो? टैंजेंशियली. तो उसको एक फोर्स टैंजेंशियल लगेगा. अभी ये फोर्स टैंजेंशियल किसको काउंटर बैलेंस कर रहा है? तो अगर तुम बोलोगे सर थ्रू आउट द मोशन एन शुड बैलेंस एमजी, बट नाउ एमजी आपको लेना ही नहीं है. प्रॉब्लम में बोला गया है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो एन को कौन बैलेंस कर रहा है भाई? यही बचा ना फोर्स. ये दोनों तो फोर्स बैलेंस कर रहा है. एन विल बी बैलेंस बाय एफटी. सो एन इज बैलेंस बाय टेंजेंशियल फोर्स, एंड टेंजेंशियल फोर्स इज m into at. तो n is equal to m into l into alpha. बस n को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डाल दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया. वहां पे मुझे ओमेगा की आंसर मिला. एंड देन सिंस आई वांट t, so I went for your kinematics, rotation kinematics. Initial angular velocity को मैंने 0 ले लिया. Can I get t is equal to under root mu by alpha? Friends, is it clear to all of you all? Vishant, is it clear to you? Clear. Okay, what about Smith? Smith, are you there?
Yes, sir. Understood. तो तूने किया था पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया था? Yes, sir. I got the answer also. ओके फाइन, लेकिन डिड यू गेट दिस पार्ट? मैंने Yes, sir. स्टूडेंट्स एक सिंपल है, कोई भी स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन कर सकता है, सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ध्यान से सुनना, बीड बीड रखा हुआ है, नॉर्मल ऊपर की तरफ जा रहा है, टैंजेंशियल ऐसे जा रहा है, सर आप इन दोनों को कैसे इक्वेट कर सकते हो? नॉर्मल हमेशा बैलेंस होता है mg के हिसाब से, लेकिन हमने mg को निगलेक्ट कर दिया, तो कोई तो फोर्स होगा ना जो नॉर्मल को हमेशा बैलेंस करके रखता है, वो टैंजेंशियल हो गया, इसलिए हमने इसको टैंजेंशियल दिया, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया है। अगर वो नहीं होता तो मैं इसको लेता नहीं, मैं इसको इन दोनों को इक्वेट करता, n की जगह पे mg डाल देता, मेरा इक्वेशन g में आता। The rest of the students, is it clear? Ashmita, Yes, clear? sir. Okay. Akash, Kevin, Mayank, Mayur. Mayank and Mayur, is it clear? Yes, sir. Rajwal, Pratham. Yes, sir. Okay, fine. अपना सोहम तो निकल गया, देखा? बोलेगा network issue. This is what the problem with the students is. Okay. Can I erase the students? इसको erase कर दूं मैं? The next one. Sir, in the next one, I got two answers. Which one for? Yes, sir. 22nd. 22nd has set two answers. Very good, Nishant. With Nishant अभी देख चार्ज हो गया, चार्ज हो गया। उसको चार्ज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और निशांत क्या करता है मालूम है सुमित? वो इजी इजी क्वेश्चंस के ऊपर टैकल नहीं करता है, वो हमेशा वो पीछे वाले क्वेश्चंस के ऊपर टैकल करता है। दैट्स गुड, but at the same time students do keep in mind, please do score also, okay, in your major test. All the time try to see to it that you score and maintain your marks, okay. Always consistency is very very important in your studies of NEET or JEE or advanced students. जो बंदा consistent है वो आगे successful होगा होगा और होगा. Nobody can stop that person, student. Okay, now 22nd. Let me explain the question first, students. Okay, let me explain the question because few of the students will not be able to get the question, students. दिया हुआ है the upper end of a string of a simple pendulum is fixed to a vertical z axis and set into motion. यानी ये सोचो students, ये तुम्हारा एक फिक्स रिजिड पॉइंट है और यहाँ पे तुम्हारा एक पेंडुलम है, ओके। हेलो, very sorry students. Now the pendulum is suspended, students, vertically consider, and it's suspended from a fixed rigid end, students, okay. Gradually तुम क्या करते हो, उसको revolve करते हो students. जैसे ये that the upper end of the string of a simple pendulum is fixed to a vertical z axis. इसको z axis ले लिया, thus they're taking it as z axis, okay. Now they are saying it and set into motion such that the bob is along a horizontal circular path of radius 2 meter, okay, parallel to the xy plane. And students, अगर ये z axis है तो कहना से ये मेरा xy plane होगा, है ना? ये देखो ये x axis होगा और ये y axis होगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तुम ये जो बॉब है उसको तुम ऐसे लेते हुए फिर उसको रिवॉल्व करो, तो धीरे धीरे बॉब कोन में चला जाएगा, कोनिकल पेंडुलम जैसा होगा। एवरीबडी लिसन केयरफुली, हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये जो बॉब है वो क्या होगा, थोड़ा सा कोनिकल पेंडुलम में चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाओ, और स्पीड बढ़ाने के बाद में व्हाट हैपेंस, नाउ द पेंडुलम इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझ में आ रहा है? You go on revolving it and then it's going in a horizontal plane. So now my diagram will be, this is your z axis. Agreed? Horizontal x axis.
This is the y-axis. Agreed. Now the body is set to revolve, students. Okay. Let us say the object is over here. This is 2 meters and is set to revolve in a horizontal plane. Is this clear? So now the upper end of the string of a simple pendulum. This was the upper end, students. This was the upper end. Now it's placed horizontal. Is fixed to a vertical Z and set into motion such that the bob moves along a horizontal circular path of radius 2 meter parallel to the XY plane. It's parallel to the XY plane, 5 meters above the origin. यानी origin पहले यहाँ पे था, उसको मैंने shift कर दिया यहाँ पे, यानी 5 minutes above the origin. Agree? यानी vertically 5 हो गया. Agree? 5 meter above the origin we consider. That's how we got it over here, above the origin. Okay, so this height is 5 meter. The bob has a speed of 3 meter per second. So what exactly the speed of the bob? 3 meter per second, students. The string breaks when the bob is vertical above the x-axis. Just above the vertical above the x-axis, the string breaks in that case. Are you getting it? Yani at a distance of 2 meters it is placed and just above. The string breaks when the bob is vertical above the x-axis and it lands in an xy plane. जब तुम revolve करोगे तो ये तुम्हारा horizontal xy plane है. The bob lands. यानी ध्यान से देखना students. यही plane को मैं नीचे की तरफ shift कर रहा हूँ. Everybody से carefully. ये मेरा x-axis हुआ. ये मेरा y-axis हुआ. Agreed? ये बॉल ऐसा मूव हो रहा है. अगर ये स्ट्रिंग ब्रेक होता है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, हाउ डज अ बॉल गोस? पैराबोलिक. यानी आई एम शिफ्टिंग इट बैक ओवर हियर एंड देन ट्राइंग टू रिवॉल्व इट. आई एम ट्राइंग टू रिवॉल्व इट. तुम्हारा ओरिजिन यहाँ पे मैंने पकड़ा है ऊपर की तरफ और रिवॉल्व कर रहा हूँ. और जब भी ये टूटता है स्ट्रिंग, हाउ एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट गोस पैराबोलिक. वेयर एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन एन एक्सवाई प्लेन. ये पैरेलल प्लेन हुआ. इट्स फॉलिंग ऑन एन एक्सवाई प्लेन. Now the question asks the students, what are the coordinates x, y? So students, x की value था ना, it was 2 meters ahead itself only. Are you getting it? So x value is, you're aware about it. You don't know the y coordinate, students. ये नहीं मालूम. यानी ये y और ये x का distance तुम्हें पता था कि ये 2 meter पे है. लेकिन y से कितनी दूरी पे? That is not known to you. So one answer will be 2, but of course. But what about the other one? Hope the question is clear. Holding a stone in your hand, revolving it and revolve it at a very high speed. तो तुम्हारा point of suspension ऊपर आ गया. Object अभी horizontally जा रहा है XY plane में. When the object is just above the X plane, उस time पे string टूट जाती है. Object का path parabolic हो जाता है. उसका X coordinate तो value 2 होगा. Y coordinate तुम्हें find out करना है. Yes, Smith, let Nishant answer first. Nishant, can you answer? So for what I done was I made an x and y axis. The y axis I put 5 meter and the x axis I put as our range. Then the velocity of the particle I put as 3 meter per second. So we'll say range that is the y distance will be equal to r is equal to initial velocity into time. So time given was 1 second. So 3 into 1 is 3 meter. Okay. Right? Fine. You can consider that. Absolutely correct. You can go for that. But if I happen to consider for 5 meter, that's a displacement we consider because it goes vertically also downwards. Yes, Smith. Can you tell me? We can take 5 is equal to okay. So, Yes. Follow, Smith. so What is string break, the particle start from the point with the speed u equals to 3 meter per second and moves as a projectile. So we can using s equals to ut plus half at square. So substituting value pi equals to 0t minus half gt square. Half acceleration will be gt square. And what exactly time taken for it? What Nishant also found out as 1 second.
So this will be 10 upon 10 आ जाएगा, so t will be equal to 1 second. 1 second, sir. Now thus it will be xy plane in 1 second, and the range that is y will travel. So s equals to ut. Absolutely correct. Students, what exactly is the formula for speed? Speed along x-axis is equal to distance along x-axis. Distance along x-axis upon time taken. And distance, speed along x-axis all the time remains constant, we consider. I get it? So we'll try to go for what is the speed we consider. अभी यहाँ पे तुम्हें कौन सा axis पे चाहिए? Y axis पे चाहिए, students. तो uy, ये क्योंकि body is made to project along y axis. Students, ये देखो, ये arrow देखो, ये y देखो, students, और ये speed देखो. Are they two both parallel? Yes. That means where is the speed is? The speed is along which axis? Y axis. I need to find out the distance of the projectile along y axis. Time taken is 1 second. So what is uy is given to us 3. Y, how much is time given to us 1? Therefore, what exactly the y coordinate is? 3 meters. So what exactly the answer is? 2,3. Hope this part is clear to all the students. Again, I'm repeating, students. The answer is now. I'm holding an object. The stone is over here, students. I'm revolving it. The stone gradually moves and it comes horizontal, students. वो horizontal plane में जा रहा है. लेकिन वो stone is at a height of 5 meters above. That means along y-axis. Are you getting it? So the stone has undergone a displacement. Students, पहले वो सीधा था. ध्यान से सुनना. स्टोन यहाँ पे था. जैसे मैं उसको रिवॉल्व करता हूँ, देखो पहले ये उसका ग्राउंड लेवल था. जैसे मैं उसको रिवॉल्व करूंगा, ध्यान से देखो. अभी देखो स्टोन कहाँ पे चला गया. स्टोन क्या हाइट पे चला गया. ये 0 मीटर था, अभी ये 5 मीटर हो गया. Now it's made to the plane of revolution is at a height of 5 meters. Agreed? That's what we consider. This height is 5 meters. So your displacement is 5 meters. Initial velocity was 0. We consider half into g square. So how much is the time taken? 1 second. I need to find out the displacement along y-axis because it's going to be projected here. 3-dimensional structure. It's going to propel in one direction. We consider that is in the direction of y-axis. So simply we go for speed, distance, and time. So what exactly the distance is? 3 meters. Is this clear to all of you all students? The 2 students already have got it. What about rest of them? Ashmita, clear? Ashmita, is it clear with you? Mayur, Mayank? Yes, sir. Okay. Ashmita, what about you? Are you there, Ashmita, or not? Yes, sir. Hello. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Clear. Okay, fine. Now, students, I want to solve from subjective page number 95, students. Solve question number 1. Okay, just do these questions, students. Question number 1, question number 2, students, question number 4, question number 6. Question number 1, question number 2, question number 4, question number 6. Subjective right now. 1, 2, 4, and 6. Yes, ma'am. You have done these questions? What, sir? You've done this question 1, 2, 4, and 6? No, sir. Okay, fine. And students, for your homework, listen carefully, students. For your homework, everybody listen carefully. For your homework, I want you all to solve page number 97. Please have a look on page number 97. Comprehension, third one. Roman 3, students. Page number 97. Students, ये comprehension वगैरह ये कहाँ पे होता है मालूम है? एडवांस में ही पूछते हैं, जेई में कभी नहीं पूछते स्टूडेंट्स. नीट में तो पूछते ही नहीं स्टूडेंट्स. नीट में nothing of that sort is there, please.
नीट पे ना ही मैथ्स का कॉलम आता है, ना ही assertion and reason आता है, ना ही ये comprehension आता है, कुछ नहीं आता है students. So please don't worry, not even more than one option. Okay, so those students who are NEET students, please don't get scared of all these things. Okay, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा thought process हो जाएगा तुम्हारा. You'll be able to get it. Comprehension Roman 3 page number 97. Try to crack that also. Okay. Yes, anybody can give me the answer. The first one, subjective first. That's a simple question, student. The sphere of mass 200 grams is attached to an inextensible string, students. Length is 130 centimeter, whose upper end is fixed to a ceiling. The sphere is made to describe a horizontal circle. And students, can I say it's a conical pendulum? Smith has raised his hand. Calculate the period of the conical pendulum and the tension string. Bolo, क्या formula होगा? Smith. So for first we will find the angle is given. So cos theta equals to under root L square minus R square upon 1. So the time period of pendulum is given as T equals to 2 pi under root 1 cos theta upon G. Okay, cos theta, what you said it is equal to H by L, and time period is given as the formula 2 pi under root L cos theta by G. तो क्या बोल रहे हो तुम? So then in first according to first equation we will substitute the cos theta by under root L square minus R square. Okay. So L square 130 into 10 to the minus power minus 2 into 2 Why upon do you 9 need? into, Why do you need that? Acha, you need theta. yes sir, theta I am solving for first I am solving for time. So applying that formula 2 pi Okay. under root. Okay. Fine. Rather than going for theta, can you go for h itself fully? यानी तुम्हारा equation तुम बोल रहे हो 2 pi. Please students, L cos theta की जगह पे क्या है वो h by g also है ना? What is cos theta? Adjacent upon hypotenuse. So h Yes, is equal to, so I can put now simply find out h. Theorem of Pythagoras, ये point of suspension है, ये conical pendulum हो गया. So can I say my h will be equal to what? Root of L square minus R square. Can I get the value of h? yes sir. 130 square minus 50 square. So can I get h and g? Can I get time period? Agreed? Yes sir. Okay, fine. Now, what about the tension in the string? So for tension on the string, T cos theta equals to mg. Okay, so now this is tension T dash. और यहाँ पे तुम किसको T को रिजॉल्व करोगे, mg को रिजॉल्व करोगे? So mg. mg, is it vertical motion or horizontal? Oh, sorry cos theta. T cos theta. हाँ, तो तुम टेंशन को रिजॉल्व करोगे ना, ये तुम्हारा थीटा हो Yes, sir. जाएगा, ये हो जाएगा T dash cos थीटा और ये हो जाएगा T dash sin थीटा, है ना स्टूडेंट्स? देखो, the question asks you to find out tension. Students, it's a conical pendulum. Conical pendulum horizontal plane. I made it very clear. कभी भी बॉडी horizontal move होता है, स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, तो स्टूडेंट्स हमेशा टेंशन को रिजॉल्व करो. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में mg को रिजॉल्व करो. पूछा क्या है टेंशन, तो तुम क्या करोगे सर? T dash cos theta can equal to mg. Why not? Is the mass of the body given to you? Yes, mass is given to you. G I know it. And what is cos theta? H by L also I know it. H मुझे मिल गया स्टूडेंट्स. H मुझे मिल गया, तो can I say T dash into H by L is equal to mg? Can I get the value of tension? So it's 2.123 Newton. Absolutely correct. तो calculator use कर रहा है स्मिथ? Naughty boy. Hope sir. हाँ कैलकुलेटर यूज कर रहा है. Sometime. ओके फाइन. नहीं स्टूडेंट्स कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है. आंसर को क्रॉस एग्री. सिर्फ वन थिंग स्टूडेंट्स, ये लर्निंग के प्रोसेस के टाइम पे तुम अगर यूज करते हो इट्स फाइन, लेकिन इसका हैबिट मत रखना. ये किसके लिए मालूम है? ये सेंसिबल स्टूडेंट्स, जिसको स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट सेंसिबल है उनको आई हैव नो प्रॉब्लम्स गोइंग फॉर दैट. क्योंकि तुमने जो फॉर्मूला यूज किया ना, अभी देखो ये इसके लिए तुम्हें आंसर टैली करना है, यानी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है.
लेकिन उसकी आदत नहीं गिरनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि व्हेन यू एक्चुअली, ये जो सब्जेक्टिव टाइप है ना स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्टिव टाइप एडवांस में पूछते हैं, मेंस में नहीं पूछते। ऐसे भी क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स एडवांस में, ये ध्यान में रखना, इतना कैलकुलेटिव है। इट टेक्स एन एम्पल ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। और फिर उसके प्रिसीजन में आ रहा है, डेसिमल्स में भी आएंगे आंसर्स, तो नियरेस्ट राउंड ऑफ वैल्यू भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा एमसीक्यूज ही आते हैं। एडवांस लेवल इज डिफरेंट टाइप अप्रोच। ये जो तुम्हारा सर्कुलर मोशन की जो भी क्वेश्चंस हमने किए ना, ये पूरा एडवांस पॉइंट के ऊपर ही है। कहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन, कहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, कहाँ पे मास्टर कॉलम, कहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो जब भी तुम कैलकुलेटर यूज करते हो तो सिर्फ आंसर को टैली करने के लिए, लेकिन वापस जब भी इसको बैठ के करो स्टूडेंट्स, तो ट्राई टू गेट द आंसर वेरी क्लोज टू द गिवन आंसर्स। Agreed? And once try to do such kind of questions by using logs also. क्योंकि सीबीएसई और एचएससी के जो भी टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स है वैसे पूछेंगे, तो तुम्हें लॉग से करना है। Okay, can you give an answer for the second one, students? Other than Smith now. Smith, now you can lower your hand. Second one, students, the driver of a car traveling at a speed suddenly sees a wall at a distance r directly in front of him. To avoid collision, should he apply brakes or turn the car sharply away from the wall? चलो, कोई अच्छी तरह से इसका रीजनिंग दे सकता है? Oh, Ashmit has given the answer. Turn the car sharply away because after applying brakes, the car will show inertia of motion. Okay. Ashmita, if you turn the car sharply, listen, Ashmita, if you turn the car sharply, don't you think so? A sharp turn, everybody say carefully, a sharp turn will always have motion accelerated. A sharp turn will always have motion accelerated. That means your car is now in a non-inertial frame of reference because motion is accelerated. So don't you feel so, Ashmita, if you are driving and if there is a wall in front of you, if your car is over here, okay, and there is a wall in front of you, if you take a sharp turn, rather than applying brakes, if you take a sharp turn to avoid collision, don't you think so you're trying to go tangentially outwards and hit the wall? Because motion is accelerated. So there will be centrifugal force acting on the car, and that's क्योंकि तुम इस तरफ जा रहे हो, वॉल यहाँ पे, तुम वॉल की दूर की तरफ जा रहे हो, तो तुम टर्न ले रहे हो, लेकिन तुम्हारा मोशन एक्सेलरेटेड होगा तो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, तो उस टाइम पर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो तुम तो हिट करोगे। अप्लाइंग ब्रेक्स अप्लाई करोगे भी, then too also you might go ahead and then stop, but can avert collision. Ashmita, is it clear? Yes, sir. स्टूडेंट्स, अभी ध्यान से सुनना, जब भी ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हो ना, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। प्लीज आगे जाके 18 साल स्मिथ, निशांत, जब तुम 18 साल के हो गए ना, तुम ड्राइविंग लाइसेंस की टेस्ट दोगे ना, अभी तो कोविड है, कोविड की वजह से नाउ दे आर पासिंग आउट मैक्सिमम पीपल जस्ट लाइक दैट, लेकिन नाउ एक्चुअली देयर इज अ टेस्ट, देयर इज अ वर्बल टेस्ट, यू द पर्सन, द ऑफिसर इज मेकिंग यू टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू, एक कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट लेता है वो, और दूसरा ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। While driving, what exactly you'll do it, and then the license has been issued. So all these questions has to be taken care of. Okay, students. So the answer for this will be apply brakes, and please don't go for sharp turn. Ashmita, okay, don't go for sharp turn, okay? Yes, sir.
Okay, fine. Okay, students, today we wind up over here itself only. Next lecture will be continuing ahead, students, and next lecture, students, will be starting with system of particles, okay? Fourth and sixth we discuss in the next lecture, students, okay? Try to complete with it. And the comprehension one also. Okay, students? Yes, sir. Okay, chalo, bye. Bye, sir.